thing plays out. I only did 2 days ago, I tell you. That's right. Yeah. My knees are literally shaking. I never experienced that before. Okay, hello everyone, and welcome to our live Bible study. And beside the people who are here with us physically, we might be joined by some people in different parts of the world as we go live. Okay, so if you remember last week, weeks ago, we came across a phrase called abomination that causes desolation. And I will try to be bilingual in Hindi as well as in English. An abomination that causes desolation. एक घृणित वस्तु जो पवित्र स्थान में रखी जाएगी और उसके द्वारा से बहुत बड़ा एक नुकसान होगा. And so what is this abomination that causes desolation? And we can see that in Matthew chapter 25 and verse 15, there is a verse that we came across, but we didn't have the time to look into it, and we shall look at in detail today. Matthew chapter 24. Please keep your Bibles open to Matthew chapter 24. मत्ती और उसका 24वां अध्याय, और वो खोल करके अपनी बाइबल्स में रखें आप, जो भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. And we will be looking at several verses today in this Bible study. And if you have any questions, you may feel free to join our live chat at the YouTube channel of South Asian Church Edmonton. And you can enter your questions there. We will try to take those questions too. All right. So Matthew chapter 24 verse 15 says, anybody? Matthew chapter 24 verse 15. The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about. Yeah, the day is coming when so who is teaching here? यहाँ पर मत्ती 24 में कौन बोल रहा है, कौन बातचीत कर रहा है, कोई बता सकता है? Who is teaching here? Jesus Christ. So these are the teachings of Jesus Christ himself. And so he talks about the end times. And in the end times, he talks about a verse 15. So when you see the abomination of desolation, and then he refers to prophet Daniel. That prophet Daniel was speaking about, prophet Daniel had prophesied about. And this abomination of desolation will be what? A sacrilegious object that causes desecration. Yeah, so it causes desecration or desolation, and it will be standing in the holy place. All right, so keep your finger there. And so what is this that Jesus was talking about? The abomination of desolation, or abomination that causes desolation. ये घृणित वस्तु क्या है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत किया और प्रभु यीशु मसीह ने प्रोफेसी किया, और ये पवित्र स्थान में खड़ी होगी. तो क्या मतलब है इसका, और क्या कैसे हम इसको आज समझ सकते हैं, इसके विषय में थोड़ी सी आज हम चर्चा करेंगे. So what is the abomination? The word abomination, घृणित वस्तु, इसका मतलब है something very disgusting, associated which is with a word called defilement, that causes defiling, or something that is idolatrous. There is this घृणित वस्तु का मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत गंदी है, घृणित है, और मूर्ति पूजा से संबंधित है, मूर्तियों से संबंधित है, वो है.
और जो कोई पवित्र चीज को अपवित्र करती है। तो इसका मतलब घृणित वस्तु वो है जो अपवित्र करती है, जो पवित्र स्थान में नहीं होनी चाहिए, पवित्र जगह में नहीं होनी चाहिए, लेकिन पवित्र स्थान में लाई जाती है, तो उस पवित्र स्थान को वो अपवित्र कर देती है और मूर्तियों से संबंधित है और जो बहुत ही घृणा योग्य है। So abomination is something that is disgusting, that is oftentimes associated with defilement and something that is idolatrous. All right? In the Hebrew also, this word abomination, in the original Hebrew word and in the Greek word, they also means, the word is, there is another word called desolation. What is desolation? The word desolation means the condition that is uninhabitable. एक बर्बादी की जगह, एक मरुभूमि जिसमें रहा नहीं जा सकता। तो ये घृणित चीज, घृणित वस्तु क्या करेगी? किसी जगह को, किसी पवित्र स्थान को वो डेसोलेट कर देगी, अर्थात ऐसा बना देगी कि जिसमें कोई ना तो रहता है और ना वो रह सकता है। Complete devastation and complete desolation, uninhabitable place is what is meant by desolation. तो ऐसी चीज जो बर्बाद कर देती है पूरी, वो हमें बाइबल में प्रभु यीशु through prophet Daniel. So what we should do as good students of the Bible? We should turn to Daniel. Absolutely. यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा दानियल नबी ने बताया था, तो दानियल नबी में हमें जाने की जरूरत है एंड वहां से हमें पता लगेगा कि दानियल ने ये क्या कहा था और किसके लिए कहा था। So turn with me to the book of Daniel and chapter 9 and verse 27 and chapter 11 and verse 13 and chapter 12 verse 11. So the book of Daniel, दानियल की पुस्तक में हम जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह ने खुद दानियल के बारे में हमें बताया कि दानियल ने ये भविष्यवाणी की थी ओरिजिनल में, तो उस दानियल के पास हमें जाना चाहिए और दानियल से हमें पता लगेगा कि उसका क्या अर्थ था ये सब बातें बताने का। So first verse in Daniel chapter 9 verse 27. And he shall make a strong covenant with many for 1 week, and for half of the week he shall put an end of sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall come one who makes desolate, until the decreed end is poured out on the desolator. Okay, so Daniel was the one who started this, talking about this abomination which will result in desolation and the desolator and all those kinds of things. So Daniel की पुस्तक में सबसे पहले हमें 9 अध्याय के 27वें पद में उस घृणित वस्तु के बारे में दानियल ने प्रोफेसी की थी, तो उसके बारे में हमें पता लगता है। There is one more verse, 11th chapter of Daniel and verse 13, and somebody please read 12th chapter of Daniel verse 11. दानियल का 11 का 13 और 12 का 11 मेहरबानी से कोई पढ़ दीजिए। 11:13. A few years later, the king of the north will return with a fully equipped army, far greater than the one he lost. 11:13. Yes. Okay. 12:11. For the kings of the north shall again raise a multitude greater than the first, and after some years he shall come on with a great army and abundant supplies. Okay. So what do you see in that verse is not about desolation or abomination, but something that will produce desolation, that will bring about the abomination of desolation. The prophecy in the book of Daniel, chapter 11 and verse 13, talks about a person, talks about a king who will bring about
such an abomination of desolation, and it will be for a few years, and he will come with great army and abundant supplies. So there will be a mighty king who will bring about this abomination in a holy place. That's the prophecy of the book of Daniel. दानियल की पुस्तक उसके 11 अध्याय और उसके 13वें अध्याय में 13वें पद में हमें दानियल एक प्रोफेसी करता है जो इस घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में लाने वाले के बारे में बताती है कि वो एक महान राजा होगा और वो किस तरीके से आएगा और क्या करेगा, ये हमें बताया है. ओके, chapter 12 and verse 13. Verse 11, chapter 12 and verse 11. Yes, दानियल की पुस्तक 12 का 11. And from the time that the regular burnt offering is taken away, and the abomination that makes desolate is set up, there shall be 1,290 days. So now there is some more detail that Daniel provides, that from the time that the regular burnt offering is taken away, from where? Where are the regular offerings? Temple. So this is a reference to the holy temple in Jerusalem. सुलेमान का मंदिर जो यरूशलेम में बनाया गया था, उसके विषय में बताया गया कि जब ये abomination of desolation यानी कि घृणित वस्तु मंदिर में स्थापित कर दी जाएगी, तो वहां से burnt offering बंद हो जाएगा. That means the offering shall be ceased. No more offerings will be taking place. But what will happen instead? This king who was mentioned in the previous chapter 11, he will establish himself and he will force his worship upon the people, and the regular offering in the temple in Jerusalem shall cease. And how many days after that? There shall be, from the time the regular burnt offering is taken away and the abomination that makes desolate is set up, there shall be 1292 days. 1290 days, okay? Blessed is he who waits and arrives at the 1335 days. But go your way till the end, and you shall rest and shall stand in your allotted place at the end of the days. Okay, so Jesus was referring to this prophecy of Daniel that Daniel has prophesied. And now we should take up these verses, keep these verses in the back of your mind as we come back to Matthew chapter 24, what Jesus said will happen. One thing is very clear, that as Jesus was talking about, this prophecy of Daniel that Jesus was referring to, Jesus meant that this is going to happen in the future. प्रभु यीशु मसीह ने जब दानियल की प्रोफेसी के बारे में मत्ती 24 में हमें बताया, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह के बोलने से कि प्रभु यीशु मसीह का मतलब था कि ये बातें जो मैं सिखा रहा हूं मत्ती 24 में, वो आने वाले समय में होंगी. और दानियल के अनुसार ये मंदिर में होगा, मंदिर में एक राजा आएगा, मंदिर में राजा सारी पूजा अर्चना को वहां बंद कर देगा और वहां पर अपने आप को स्थापित कर देगा, और उसके बाद से 1290 दिन होंगे इन दिनों के बीच में. All right, let's come back to Matthew chapter 24 and verses 15 to 16. मत्ती 24 उसका 25 और उसका 15 से 16 है. 24 का 15 से 16. So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel standing in the holy place, let the reader understand. Okay, so Jesus mentioned that when these things happen, you should understand. Let the reader understand. Jesus also did not go in much detail. In Mark's Gospel, chapter 13, also the same phrase is used, let the reader understand. He was basically meaning it a prophecy for the Jewish people. And because he was referring to Daniel,
the book, they were supposed to know the prophecy of Daniel, and they were supposed to put their minds to it and their hearts to it to understand. Let the reader understand. Don't just wait upon preachers to tell you everything, spoon feed you, but you should give heed to the prophecies in the book of Daniel and to all the scriptures that is written. Read yourself, give your time to that. जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पढ़ने वाला या सुनने वाला इन बातों पर समझे, तो उनका कहने का मतलब था कि केवल जो दूसरे सिखाते हैं उसी पर ध्यान मत दो, परंतु खुद बाइबल के पढ़ो, खुद दानियल की पुस्तक को पढ़िए, खुद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़िए, खुद प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़िए और उनमें अपना ध्यान लगाइए। इन दिनों में खास तौर से जब हमारे पास समय है तो इनमें पढ़ने में ध्यान लगाइए। केवल पका पकाया दूसरों से मिलने के लिए तैयार नहीं रहना, खाने के लिए तैयार रहना है, परंतु खुद खाना है, खुद पकाना है इन दिनों में। और इसीलिए तभी पढ़ने वाला और तभी समझ सकता है जो प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहे थे। ओके, 16th verse, Matthew chapter 24 verse 16. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Okay. Let the one who is on the housetop not go down Yeah. to take what is in his house. Okay. And let the one who is in the field not turn back. Okay, so when this happens, or when we see this coming, we need to take certain actions that Jesus was prophesying. There are certain things that you have to stop doing, and there are certain things you have to learn to do. Just as the pandemic is teaching us, जैसे आज महामारी के समय में कुछ चीजों को हमें करने से रोकना है और कुछ चीजों को करना सीखना है, उसी तरीके से जब ये अंतिम दिनों में होगा और ऐसे काम होंगे जिनके लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, उनमें कुछ चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीजों को हमें करना पड़ेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया। One more verse that we need to look into in the right context is the book of Revelation and chapter 13 and verse 14. प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसकी 14 आयत को कोई मेहरबानी से पढ़ दीजिएगा। And with all the miracles he was allowed to perform on behalf of the first beast, he deceived all the people who belong to this world. He ordered the people of the world to make a great statue of the first beast who was fatally wounded and then came back to live. Okay, so if we take Daniel and Matthew and Revelation in context and together, we see that this abomination is talking about somebody who will put himself up in the temple, and he will cause the worship and the sacrifices cease in the temple, and he will lift himself up and ask people and deceive people to worship him. Okay, तो जो व्यक्ति abomination ये घृणित वस्तु को करेगा, तो वो अपने आप को मंदिर में स्थापित कर देगा और लोग अपने मंदिर में जो परमेश्वर की आराधना होती है उसको हटा देगा, परंतु लोगों को इतना बौखला देगा और उनको भ्रमित कर देगा कि वो लोग उसकी आराधना करना शुरू कर देंगे। Now, so there are a couple of questions whether this thing has happened or is it yet to happen. पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये बात हो गई है या अभी होने वाली है। So, मेरे प्रियो, ये बात हिस्ट्री में एक बार हो चुकी है। Once in history, this prophecy of the book of Daniel has come to fulfillment. And that was around 175 BC, before Jesus Christ. 175 years before Jesus Christ, there was a king called Antiochus Epiphanes IV. His name is very interesting, actually. The Epiphanes means the glory of God, the appearance of God. So he declared himself as the glory of God, as the appearance of God, that God has been revealed through him. He, in 175 BC, came with a huge army and captured Jerusalem
and established himself as the authority over the temple and sacrificed, guess what? A pig in the temple in Jerusalem. यदि आपको इतिहास में देखें तो दानियल की ये प्रोफेसी एक बार पूरी हो चुकी है जब एंथियोकस एपिफेनस नाम फोर्थ नाम के एक राजा ने अपने आप को यरूशलेम में स्थापित किया, बहुत बड़ी आर्मी लेकर के आए, and he established himself as the ruler over Jerusalem and the temple. और वहां पर उन्होंने अपने आप को राजा ही नहीं, अपने आप को भगवान, अपने आप को परमेश्वर करके डिक्लेयर कर दिया। उनके नाम एपिफेनस का नाम ही मतलब ये है परमेश्वर की छाया जिनके ऊपर प्रकट हुई है, जो परमेश्वर को प्रकट करते हैं, जो स्वयं परमेश्वर है। और उसने वहां पर मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में, महापवित्र स्थान पे जहां पर परमेश्वर की आराधना होती थी, जहां पर महापवित्र परमेश्वर की आराधना होती थी, वहां पर उसने एक सूअर को लेकर के बलिदान किया और उस स्थान को बहुत ही अपवित्र कर दिया, डिसेलेटेड कर दिया, डेसोलेट कर दिया और उसके बाद उसको बर्बाद कर दिया। तो जो नाम का एक गॉड था, जो ग्रीक गॉड था, he was a Greek king and he was a zealous god, and he sacrificed a pig in the holy of holies, and he later wanted all of Israel to worship him, King Zeus, or the king Antiochus Epiphanes IV. Thousands and thousands of Jewish people were killed because they refused to worship Epiphanes. That's why desolation. हजारों यहूदियों की मौत के घाट उतार दिया इस एपिफेनस राजा ने, जेयस ने, जो भगवान अपने आप को डिक्लेयर किया था, क्योंकि हजारों, about 80,000 Jewish people who refused to worship him, they were massacred. Their blood was mixed with the holy temple, and it became a desolate place. तो हजारों लोगों का लहू बहा दिया गया और बहुत ज़्यादा ये बुरा उसने किया। एंड उसके बाद उसने जो नहीं उसके पास बात मानते थे उनको स्लेवरी में लेकर के गया। those who did not obey him, those who were still alive, he took them into slavery, and that was the abomination that causes desolation happened in the temple in Jerusalem before Jesus Christ in about 175 to 185 BC. 175 से लेकर के 180 BC के दौरान में प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस एपिफेनस नाम के ग्रीक राजा ने अपने आप को परमेश्वर घोषित करके यहूदियों के मंदिर को बर्बाद कर दिया। मंदिर में सूअर की बलि चढ़ा दी और हजारों लोगों को मार दिया, और जितने जिंदा बचे थे उनको उसने स्लेवरी में यानी कि गुलामी में बना करके ले गया। तो दानियल की ये प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही पूरी हो चुकी थी। This prophecy of Daniel was fulfilled in the